Jai Hind friends, Vande Mataram. Now we are going to understand the technological and institutional reform in agriculture. So meaning of reform I earlier explained you, that is the Sudhar. So whatever reform is done with the help of technology and with the help of framing law by the government, so that reform is called the technological or technical or institutional reform. Before this, we studied the different crop produced in India, their weather situation, their fertility situation, that all things we try to understand earlier lecture. Now here, these two reforms and with that green revolution and the position of India in world level in the field of agriculture is what? That all questions answers we will try to find in this part. Okay, so let's start with technological and institutional reform. So first of all, try to understand what is the meaning of technological reform. So changes or the reform which has done in agriculture with the help of modern technique, means with the help of electric and electronic machines and gadgets. Okay, with the help of new seeds, better quality seeds, with the help of new irrigation system, with the help of better fertilizer, okay, and try to yield more crop rather than traditional way, that all reforms are known as technological reform. Okay. So let's read it one by one. The changes which have taken place in seeds, fertilizer and farm implements in India are known as technical reform. The farmer who earlier used leather bucket and water wheel, now using the submersible pump, monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinkle system. This change in the field of irrigation, and that's why it is technical reform in the field of agriculture. Chemical fertilizer instead of natural manure, diammonium phosphate, that is the DAP, nitrogen phosphate, potash, that is the NPK, urea or other biofertilizer, liquid biofertilizer, biotech seed are used in the field of agriculture compared than conventional seed and conventional manure system. Okay, next is farmers are constantly guided through the radio, television, newspaper, especially recently when Prime Minister Modi government has come. After that, for the new kinds of information, whatever changes are there in the field of agriculture, one specific channel has opened by the government or launched by the government, and that is the DD Kisan channel. Okay, there the all kinds of agriculture information is provided to the farmers. SMS and on mobile by the Kisan, and it is a toll-free number. Okay, Kisan call center. Its number is 1-800-180-1551. Okay, that is Kisan call center. Whatever kinds of difficulties faced by farmer in the agriculture production, that all kinds of difficulties, their solutions are given by the expert in this toll-free number.
Okay, against government farm web portal I Khedut and mobile app like Agri Market is launched by government to make the farmers' economic condition improve. Okay, and that all reforms are the subject of technical reform. Next is new agriculture research and new techniques are conveyed to the farmers in the village by Gram Sevak, that is the Talati. The farmer training center is established in every district headquarter wherein the farmers are given training. You know very well this is the time when global warming, greenhouse effect, okay, weather changing, all these problems we are facing. So in that scenario, how farmer has to be change their mindset according to new circumstances. How can farmer face all these things? All that kinds of trainings are given in farmer training center in district level, in district headquarter. At the same time, what kind of crop can farmer grow compare than the conventional farming, that all kinds of trainings are given the farmer to make them prosperous, and all these are the subject of technical reform. Recent information and guidance are provided to the farmers through the agriculture fairs in Gujarat. You know, government Narendra Modi government has launched Kisan Medo, Kisan Vikas Yatra, Kisan Rath Yatra, and in that the government officers reach each and every small village and they give the detailed information the farmer regarding their crop, what kind of crop they have to grow, okay, in changing scenario. Agriculture universities in agriculture colleges are established in every state. Agriculture universities are established at Dandiwada in Banaskantha district, okay, Junagadh in Junagadh district, Anand in Anand district, and Navsari in Navsari district in Gujarat. There are the universities carried out research and prepare new export in agriculture. What are the function of agriculture universities, children? Okay, they consistently do the research in the field of agriculture. What kind of new pattern of crop can be grown with less water in worst weather condition? That all kinds of research are going on there in seeds, in plants, okay, and that all things is done by the agriculture engineer. Okay, so this is also one place where we can make our career. It is not so that after taking the science हमको जो है दूसरे ही फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है. Even we can do the agriculture engineering. Okay, and this Dandiwada, it is not only the agriculture university prominent in Gujarat, it is very famous all over the India. You will be surprised, अपने गुजरात से ज़्यादा बाहर से लोग यहाँ पर आकर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं. ओके, एंड इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 12th, जब आप आपके करियर चूज करने के लिए जाते हो तो यू कैन चूज़ एग्रीकल्चर इंजीनियर एज योर करियर. यहाँ पर भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पास में स्कोप है कि आप जो है अपने इनोवेशन से, अपने आइडियाज से कुछ नया वर्क कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. Beside these, Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, and Department of Agriculture Research and Education, that is DARE, are active at national level. So all these are your technological reform. Now let's talk about the institutional reform. हम लोग institutional reform की बात करेंगे. The meaning of institutional reform is there that by making the laws, कानून बनाकर, बराबर है, किसानों को इकोनॉमिकली, सोशली स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको ज़्यादा पावर
उनकी जो है क्रिएट करना, उनको जो है सेल्फ रिलायंट बनाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. वी नो वेरी वेल बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ जमींदारी सिस्टम इन आवर इंडिया एंड जमींदार वेर एक्सप्लॉइट द फार्मर. As soon as we become free, immediately that system was abolished by the Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru ने जमींदारी सिस्टम को abolish कर दिया. Why? To give the rights to the farmer to their own land. In Gujarati, one specific proverb is there, that is the खेड़े तेरी जमीन. जो जमीन जोतेगा, जो जमीन प्लो करेगा, वही उसका मालिक होगा. ओके, इट शोज दैट गवर्नमेंट इज रियली सेंसिटिव टुवर्ड द रिफॉर्म एंड मेक द इकोनॉमिकल एंड सोशल स्ट्रॉन्ग टू द फार्मर. फार्मर को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है. गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स एफर्ट्स एनी हाउ. सो द रिफॉर्म कनेक्टेड विथ लैंड ऑनर, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया. गवर्नमेंट हैज discarded the landlordism. I earlier explained you. And stop the exploitation of farmer under the land to the tiller. Just now I said no, खेड़े तेरी जमीन. Tiller means जमीन को plow करने वाला, till करने वाला. The land tiller have been given their right to become the owner of the land. Those who were tiller, they became the owner of that field, that land. The disparity means the भेदभाव among the landowners has been removed by Land Ceiling Act. Means doesn't matter whether farmer is poor or farmer is rich, all kinds of facilities launched by government, they have the equal right to get that. Before independence, आज़ादी से पहले ऐसा नहीं होता था. जितने भी ऐसे बेनिफिट्स मिलते थे, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, वो रिच फार्मर लोगों को मिल जाते थे, पुअर फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था. लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट लॉन्च द लैंड सीलिंग एक्ट एंड ड्यू टू दैट वॉट एवर द गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज रिसीव्ड बाय ईच एंड एवरी इवन मार्जिनल फार्मर एंड वेरी स्मॉल फार्मर. Farmer are given the financial help for crop subsidy by Kisan credit card and nationalized and cooperative bank. Different kinds of credits means udhar or the loan is given by the bank to the farmer for their crop. आप लोगों को मालूम होगा रिसेंटली सरकार ने फार्मर्स लोगों के लिए बहुत सारे नए नए रिफॉर्म लेके आए. अभी उन्होंने जो है फार्मर्स लोगों के लिए जो है नया कानून लेके आए, जिसके अंदर किसान लोग अपना जो क्रॉप है वो जो है ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं. बाय दैट दे बिकम फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रोकर्स. जो दलाल लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, उन लोगों से उनको मुक्ति मिल जाएगी और वो अपने मन के हिसाब से अपने क्रॉप को बेच सकते हैं. ये बहुत अच्छा कानून है, बहुत सालों से इसकी ज़रूरत थी एंड दैट वाज फुलफिल्ड बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट. बहुत सही इन लोगों ने काम किया है और नो डाउट अब लोग अपने इसके लिए अपोज करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ रियली बेनिफिट फॉर द फार्मर्स. Farmer are given the full insurance protections of their crop through the Prime Minister Crop Insurance Scheme. इसको जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया. इससे पहले मनमोहन सिंह साहब ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम दैट वाज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट. बहुत अच्छी तरह से ये काम उन्होंने किया. इवन आप लोगों को मालूम होगा किसान लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों को हर 3 मंथ्स में 6,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में डायरेक्टली जमा किए जाते हैं. और सबसे उसके लिए सरकार ने देखो कितना सिस्टमेटिक प्लान में वर्क किया. पहले उन लोगों के अकाउंट ओपन करवा के दिए, उसके बाद में डायरेक्टली वॉट एवर सब्सिडीज आर देयर दैट इज डायरेक्टली सेंड टू देयर अकाउंट एंड लाइक दैट वे it become very helpful for the kisan who are marginal and poor. Next,
to provide the legal support and open auction process to make widespread the sale of the farmer. उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी जो लॉ लॉन्च किया है वो रियल में जो है किसानों के लिए एक बूंद साबित होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. नेक्स्ट, फैसिलिटीज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा हैव बीन प्रोवाइडेड सो दैट द फार्मर वुड गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट. तो फार्मर लोगों को हर तरीके से बेनिफिट मिले, उसके लिए सरकार ने बहुत बहुत सारा काम किया है और हर एक सरकार ने अपने अपने तरीके से एफर्ट्स डाले हैं. Following organizations are operating for the purchase of the farm product for the farmers as support price, and that is the National Agriculture Cooperative Market Federation, that is the NAFED. Second, Gujarat Cooperative Oil Seeds Grocer Federation, GROFED. Next is National Dairy Development Board, that is NDDB. All these are the platforms which work for the betterment of the farmer. किसानों की भलाई के लिए ये सब काम करते हैं. Next is the most important part, that is the green revolution. Make the improvement in the field to improve the crop pattern, to increase the economic condition of the farmer with the help of new technology, new seeds, okay, and new way, that is known as the green revolution, हरित क्रांति. इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसका एक अपना पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है बच्चों. हमको जरूर आज इस रेफरेंस में इसे भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, the most fertile part or the agriculture part has land has goes to Pakistan due to the partition. Okay, the western Punjab and the east Bangladesh. Okay, because of that partition, the production of crop become less in India and we become dependent on another one for the food grain. हम लोग अमेरिका से उस जमाने में जो रेड वीट मंगाते थे, वो इतने वो लोग बेकार लोग थे, हमको ऐसा यहाँ पे वीट भेजते थे जो उनके कंट्री में उनका पिग भी नहीं खाता था. दैट वाज द सिचुएशन. एंड ये सिचुएशन को बदलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो है एग्रीकल्चर प्रोग्राम लॉन्च किया. उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में बड़े बड़े डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, बिल्ड किए, और उसके बाद में जो है इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया. और उसके बाद में जो है जब जवाहरलाल नेहरू के बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो ही हैज़ गिवन वन स्लोगन, जय जवान जय किसान. और विथ दिस स्लोगन ही ट्राइड टू become the India self sufficient in the matter of food grain. अनाज के मामले में कम से कम हम आत्मनिर्भर हों. लेकिन बीच में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है एंड आफ्टर दैट इंदिरा गांधी ने इस प्रोग्राम को और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया. एंड इन 1968 शी लॉन्च्ड द प्रोग्राम, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन. और उसके तहत पंजाब में और हरियाणा में जो है नए टेक्नोलॉजी की मदद से, नए सीड्स की मदद से, अच्छी इरिगेशन की मदद से बम्पर क्रॉप लिया गया. एंड लाइक दैट वे द ग्रीन रेवोल्यूशन पार्ट बिकम सक्सेस ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी. देखो बच्चों, कोई भी एक काम जो है एक जनरेशन में कंप्लीट नहीं होता. 3 प्राइम मिनिस्टर ने जब एफर्ट्स डाला तब जाके ये काम जो है कंप्लीट हुआ. बट यहाँ पर रुकने की जो है बात नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ वीट में सेल्फ सफिशिएंसी थी. इंडिया और भी दूसरे प्रोडक्ट यूज करता है. सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह इन हिज राइजिंग, और उन्होंने जो है खास करके राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स डाले, और उसको लीड करने का काम दैट वाज डन बाय द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. उन्होंने जो है इस काम को और ज़बरदस्त तरीके से खास करके ईस्टर्न यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा जो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, उनको जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर किया और ज़्यादा राइस का क्रॉप लिया जा सके उसके लिए तैयारी की जा रही है. सो लेट्स रीड अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन. Green revolution took place in our country in the decade of 1960.
But before that, there was a time when there was no acute shortage of food grain in the country. What was the reason? I told you just now. An agrarian country had important food grain. The country was struggling against such dependent condition. The extraordinary increase in the agriculture product because of improved seed, increased use of the chemical fertilizer, intense efforts of the farmer, widespread arrangement of electricity distribution, improvement facility of irrigation is known as green revolution. यानी कि drastically change in the production process in agriculture field with the help of new equipments, new facility, new things and new techniques, that is known as green revolution. Okay, main objective of the green revolution was to increase the agriculture productions. Farmers were encouraged to use the chemical fertilizer and insecticides more. This lead to attain the target to increase the agriculture production. There has been record production of the wheat and paddy due to the green revolution, whereas there was a scarcity of food grain in the country. Today we are sufficient storage of food grain. बहुत जबरदस्त, in another word I can say we have the buffer stock of the food grain. हमारे पास में बहुत बड़ा स्टॉक है और उसी वही नतीजा था बच्चों. ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड प्राइम मिनिस्टर ने 80 करोड़ लोगों को बराबर है बिल्कुल फूड गारंटी देकर उनके घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया. इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता था, देता फूड ग्रेन नहीं होता था, हमारे पास बफर स्टॉक नहीं होता था. पूरी दुनिया इस बात को लेकर लोहा मान गई. बराबर है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. हम लोगों को शायद लगे ना लगे, हम कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, बट इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट कि इतनी बड़े चैलेंज में, इतने बड़े पेंडेमिक में इतने सारे लोगों को रोजगार न होने के बावजूद घर बैठे खिलाना. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ जोक. बराबर है, दैट इज फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट. सरकार ने वो पूरा किया और इसके लिए डेफिनेटली उनको हम जितना अप्रिशिएट करें वो कम है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, आवर फार्मर्स, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए. There have been the record production of the wheat. Okay, whereas next, once drought has or was the hazard due to the regular interval in India, an adverse effect are not seen after the green revolution. पहले जो है इंडिया में frequently drought वगैरह पड़ते थे, यानी जिन्हें गुजराती में दुकाड़ कहवाए, अकाल बोलते हैं, खाना अनाज पैदा नहीं होता, बरसात नहीं होती है और बहुत सारे लोग मर जाते थे. ये सिचुएशन जो है ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज स्टॉप्ड. डजंट मैटर अगर कोई एरिया में बरसात नहीं भी पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू द हंगर, ओके, और ड्यू टू द स्टारवेशन नोबडी इज डाई, कोई मर नहीं रहा है, बिकॉज वी हैव द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन एंड सप्लाई चेन इज मेक स्ट्रॉन्ग बाय गवर्नमेंट. सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम कर रही है. Once drought was hazardous of the regular interval in India, its adverse effects are not seen after the green revolution due to the buffer stock of food grain. The condition drought of scarcity are faced conventionally. The self-sufficiency of food grain in landmark of the historical achievement of India. Today we are not only the self-sufficient, but at the same time we are selling, or we can say the exporting the grain to the another part of the country, specifically the Latin America, specifically the African country and South America. ओके, सो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हम लोगों ने कितनी ज़बरदस्त अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ ग्रेन की है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है भाई. बराबर है, अगर आप हमारे नेशनल इनकम में हमारी जीडीपी को अगर आप कंट्रीब्यूशन देखते हो, it is almost 23% in our national income which has come from the agriculture. उसके कंपेयर में अगर आप ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इधर जो है फ्रांस और अमेरिका को देखो, हार्डली देयर कंट्रीब्यूशन इज 2 to 3%, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा इन लोगों का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में नहीं है उनकी जीडीपी का, जबकि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर से आता है. एंड दैट इज इंडिया इज कॉल्ड द एग्रीरियन कंट्री. बराबर है, हम हमारी रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर ही रही हैं, लेकिन हम साथ में जो है दुनिया को भी खिला रहे हैं. नो डाउट हमको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन देने की भी ताकत होनी चाहिए. वो कब होगी? व्हेन यू प्रोड्यूस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग.
Okay, so this is the thing which we have to understand the role of agriculture in Indian economy. Okay, so certain bullet point I am showing you here. It provide the employment about one half of the population of the country. इसका मतलब ये हुआ more than 50% of population of our country is directly indirectly associated with the agriculture. खेती से बहुत बड़े हिस्से को रोजगार मिलता है. Second, agriculture hold about 71% of the total GDP in our national income. National income में हमारा जो contribution है बराबर वो 17% जितना है. Paddy, wheat, oil seeds, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes, etc. are major agriculture production in India. Much foreign exchange is earned with the help of this. We are the second largest country of the world in agriculture production. Okay, different industries like cotton, textiles, sugarcane, oil seeds, all these are regarding the food agriculture only. देखो बाजू में एक ग्राफ दिया हुआ है बच्चों. इस ग्राफ को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो 2009 में देखो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन 218.11 करोड़ टन था, विच इज इंक्रीज 2013-14 देखो 265 टन बराबर है. ये जो है आपको जो 2014-15 का ये कंप्लीट नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे देखो आप लोगों को लिखा हुआ है फोर्थ, मतलब क्या बोलते हैं 3 महीने का जो है ये रिकॉर्ड दिया हुआ है आप लोगों को. अगर पूरे का दिया हो तो डेफिनेटली इससे आगे जाता था. बाजू में आप लोग देखो तो 2013-14 में पैडी, वीट, पल्सेस, कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज, मेज, जवार, बाजरा, ये सब, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड शुगर कैन का कितना कितना प्रोडक्शन था लाख टन में, करोड़ टन में, दैट इज मेंशन देयर. सो इसको रीड करना, मे भी एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकता है. Next, agriculture provide food to the people of India. The Indian contribution is not consistent in the world agriculture market because irregular and uncertain rain and inadequate facility of irrigation. Food security is necessary for any countries. हमारे गवर्नमेंट ने भी जो है फूड सिक्योरिटी बिल लॉन्च किया. लास्ट जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह सर की सरकार, और उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि देयर इज कोई भी आदमी ड्यू टू द स्टारवेशन और ड्यू टू द लैक ऑफ फूड कम से कम इस देश में मरेगा नहीं. हर किसी को मिनिमम फूड गारंटी तो मिलेगी. एंड ड्यू टू दैट रीजन आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक स्कूल में मिड डे मील जो प्रोग्राम चलाया जाता है वो इसी फूड सिक्योरिटी लॉ के तहत चलाया जाता है. Okay, let's see next. We have become self-reliant in the field of grain production due to the green revolution. Along with the increase in farmer production, there is an increase in the population of the country. Also in 1951, India's population was 36 crore 10 lakh and now it is more than 125. आजकल तो हर किसी नेता के मुंह से यही सुनने को मिलता है 130 करोड़. Is it clear? This has increased the demand for food grain. However, there has been increase in the production of food grain in our country during last 5 years. In 1950-51, India has produced 51 crore ton of food grain, which I shown you in last graph, which has increased to recorded level 265.04. Okay, this entire information you will get in page number 87, 10.9 Green Revolution graphical presentation. With the food grain which we have today, the minimum requirement of the country has fulfilled. It is necessary to maintain the buffer stock and to increase it. The buffer stock of the grain, the scarcity of the grain can be prevented during the drought in case of the inadequate production of the food grain. The wastage of food grain कैन बी प्रिवेंटेड. हमको खाना बिगाड़ना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका हमको खास ख्याल रखना है. इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक टू प्रिजर्व द ग्रेन इन वेयर हाउस. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ में उसको स्टोर करने की भी जगह बढ़नी चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए. द हंगर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिली कैन बी सेटिस्फाइड विद द बफर स्टॉक is distributed among them free of charge. It is storage necessary for the time to stop the wastage of food grain. It is necessary to strengthen the food stocking in arrangement to conserve it. It is good happening that the government is made previous to supply the food grain up to the poor class, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया with the help of Food Security Act. Now
वी आर इन द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम में हाउ कैन इंडियन एग्रीकल्चर कॉम्पीट विथ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर, दुनिया के दूसरे जगह में जहाँ पे खेती हो रही है उसके साथ में हम कैसे उसके साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं और अपने आप को वर्ल्ड मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके बारे में बात की है और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा। The policy of globalization has been implemented with the purpose that the Indian farmer sell this farm product with the world market to earn profit. Many changes taken place the agriculture field due to the globalization. The process of export of import crop production is made very simple. Cotton, chilies and till is now available in Chinese market. Why? Because we are exporting there, हम बेच रहे हैं उन्हें। Okay, and various fruit like kiwi जो कभी किसी ज़माने में इंडिया में नहीं मिलता था, ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन इट इज़ अवेलेबल हियर। अब तो हम भी इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में। What is now available in Indian market? The costly genetically modified BT seed is sold in multinational companies are now available in India. No doubt महंगे हैं थोड़े लेकिन इंडिया में अवेलेबल हैं। Due to this farming it become costly. The production of the cotton and maize has increased with the important become smoother. The domestic farm product have faced through the competition. Some product have gained global market as necessary to registration their patent। ये बहुत essential है खास करके हमारे फार्मर को। अगर वो कोई नई ब्रांड प्रोड्यूस करते, नई जात बनाते तो उसका पैटेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर उसका बेनिफिट कोई और देश लेकर चला जाएगा। इसके लिए फार्मर लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को फार्मर को हेल्प करने की ज़रूरत है। Qualitative farm production as national patent in the world market. To face the competition in agriculture product, the global market, India will have to be adopt the new technology and concentrate on quality. A series of planted steps will have to be taken, increase the economic prosperity and solidarity of people. With increasing the population, the probable future increase in the demand for agriculture product. To maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for third green revolution. In your book it is written second, but already second is launched by Dr. Manmohan Singh. हमको एक थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। ये वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। यहाँ पे मैं आपको पूरा लेसन कंप्लीट करके दिया है। ओके, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द फोर्थ चैप्टर लिटरेचर, बराबर है। उसके बारे में मैं आपको पूरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।